पाकिस्तान की कशिश 28 साल रशियन खातून कैटरीना को खींच लाई और इसने पाकिस्तानी नौजवान से शादी करके यही बसेरा कर लिया। कैटरीना ने अपना पाकिस्तान में पिज्जा पॉइंट खोलकर नई दुनिया बसा ली है। 2018 में रशिया में वर्ल्ड कप हो रहा था फुटबॉल का, तो फुटबॉल तो हो गया, ट्रॉफी में पाकिस्तान लेकर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कतरीना है। कैटरीना है? कहाँ से आई आप? मैं रूस में है। रूस में? रशिया? मॉस्को? यस, मॉस्को। इनको उर्दू सिखा दिया आपने? थोड़ी थोड़ी सिखा रहे हैं, कोशिश करेंगे उर्दू सीख लें ये। अच्छा। When you first met Usman? 5 years ago we met. He came to Russia, so we met in Moscow. Moscow? Yes. You know about Urdu? थोड़ा सा। थोड़ा सा। जी। अच्छा, tell me about your love story. So we met in Urdu. Oh, difficult. हम मॉस्को में मिले थे। अच्छा, 5 साल पहले? 5 साल पहले है। मैं उस्मान मैं बहुत पसंद है। अच्छा। किसका? चलो, explain in English. Okay, we met 5 years ago in Moscow. After communication sometime, so Usman proposed me, and it was a big love story. And I moved here to Pakistan, to Lahore, because of him, because he lives here. So we started our family over here in Lahore. Everyone is leaving Pakistan. Why you moved Pakistan? I moved to Pakistan only for my husband. So because we decided this is how we will live now, and for now we are happy here. The most important that we are together, and where we live, it is a second issue. So we can. The most important that we are together. उस्मान भाई जरा थोड़ा बताएं, इन्होंने तो बता दिया, अब आवाम को समझाएं क्या ये लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ मिले और कब मिले। जी, ये लव स्टोरी शुरू हुई 2018 में। मॉस्को एयरपोर्ट पे स्टार्ट हुई है स्टोरी। मॉस्को एयरपोर्ट पे मैंने इनको पहली दफ़ा देखा था और उसके बाद हमारी दोस्ती हुई। मैं काफ़ी अर्सा वहाँ पर रहा मॉस्को में, तो इनके साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। मैंने इनको प्रपोज़ किया और इनको कहा कि आई मेरे साथ पाकिस्तान चलें, हम शादी करते हैं। तो ये रज़ामंद हो गई, क्योंकि इनके ख़यालात थोड़े ईस्टर्न है, रशियंस के पाकिस्तानियों से मिलते जुलते हैं। इनकी अम्मी ने मेरा इंटरव्यू किया, इनकी नानी ने मेरा इंटरव्यू किया, जैसे हमारे यहाँ भी पाकिस्तानी स्टाइल में होता है। तो उसके बाद सारों से जब इंटरव्यू में पास हो गए तो इनको इजाज़त मिल गई शादी करने की। मेरे साथ पाकिस्तान आई, हमने यहाँ पे निकाह किया, शादी की, और सब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। पाकिस्तान में तो इंडिया वाले नहीं आते, ये रशिया से आप ले आए हैं, ये क्या चक्कर है? बस कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है, तो जब किसी को सच्ची मोहब्बत हो जाए तो फिर लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी उसकी खातिर दे देते हैं। तो ये इस चीज़ की सच्ची जीती जाती एग्जाम्पल है। हालांकि रशिया से पाकिस्तान में आके रहना बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल टोटली अपोजिट कंट्री है रशिया के मुकाबले में। यहाँ पे वेदर बहुत डिफरेंट है, फूड बहुत डिफरेंट है, कल्चर बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये कॉपरेट कर रही हैं, मेरे साथ एडजस्ट कर रही हैं और यहाँ पे एक हम बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, रशिया क्यों गए थे आप, और फिर मतलब कहाँ आके यूनिवर्सिटी में मिले, कहीं पे किस मौजूद आपके साथ कहाँ मेट थी आपकी? मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक़ है, तो 2018 में रशिया में वर्ल्ड कप हो रहा था फुटबॉल का। इसी सिलसिले में मैं फ़ुटबॉल का मैच देखने चला गया, तो फुटबॉल तो हो गया, ट्रॉफी में पाकिस्तान लेकर आ गया। Katrina, tell me about your experience in Pakistan, and when, how you started your restaurant in Pakistan, why? So I came to Lahore 5 years ago. Our restaurant we started just a few months ago. I adjusted to everything over here almost, but to adjust to food was quite difficult for me. When I came here, food, I wanted to try everything. I was excited. Food was quite exotic for me, but after some time I understood that I'm missing my food, and it was very hard to find food which is familiar to me, because Pakistani food for me is very spicy. It's too spicy or too sweet. So we went to many places, and I found out that for some reason the food which is of European taste, like for me it looks like simple, but over here it is very expensive, and you need to go to fancy places for that. So what is idea came to my mind that we should
open some restaurant, we can introduce food with good quality but affordable to people. So because I also have friends, so they also missing non-spicy food and but flavored at the same time. So what is our mission, and what we are trying to do is that we want to introduce people pizzas which are like rich of flavors and which can suit both Pakistanis and foreigners, because we have like Pakistani flavors like peri peri, tikka, fajita, but also we have European flavors. And like I don't know how is spinach pizza. I never met anywhere it. So point of view how we started the pizza is that I couldn't find the food which I would like to eat, and the pizza is like food which everyone likes to eat and especially to order. And I think everyone in COVID experienced that you have to order food. And anywhere in the world, pizza mostly is a delivery business. So you just call the pizza restaurant. Take away, yes. So it's not like for dining in. So that is how our idea came to our mind. And a few months ago, we opened our pizza. We made some quite bit research, and we made our recipes ourselves, and many things like sauces, dough, we keep it as a secret. We are doing ourselves, and sauces we're doing at home because they're not available in the market, unfortunately. उस्मान भाई क्या कुछ कह रही हैं, थोड़ा आप बताओ। बेसिकली वो एक्सप्लेन करेंगे, जब वो पाकिस्तान आई तो यहाँ के खाने आपको पता है बड़े मिर्च मसाले वाले रिच फ्लेवर्स वाले होते हैं, तो इन्होंने शुरू में तो बड़े एंजॉय किए सारे खाने। बाद में आपको पता है हम भी अगर बाहर जाएँ तो हम बाहर के खाने एंजॉय करते हैं कुछ अरसे तक, उसके बाद हमें अपनी फ़ूड की तलब होती है, हम अपनी तो इनको भी ये फिर कुछ अरसे बाद अपनी फ़ूड तलाश करने लग गई कि वो जो इनको टेस्ट वहाँ पे रशिया में मिलता था वो वाली फ़ूड यहाँ पे मिले। तो वो वाली फ़ूड पाकिस्तान में जहाँ पे भी अवेलेबल है वो बहुत एक्सपेंसिव है फॉर सम रीज़न, और बड़े आपको फैंसी और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ता है उस तरह की फ़ूड के लिए। तो इसको सोचते हुए इन्होंने कहा कि क्यों ना हम खुद से कुछ ऐसा करें कि हम बाहर की जो फ्लेवर्स हैं वो टेस्ट हैं वो लोगों को दें और एक अच्छी प्राइस पे दें और बड़ा कन्वीनियंट हो सबके लिए वो वाली फ़ूड एंजॉय करना। तो काफ़ी इन्होंने रिसर्च की डो की क्वालिटी के ऊपर, चीज़ की क्वालिटी के ऊपर, और इन सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप किया है जो कि बड़ा अफोर्डेबल और कन्वीनियंट है सबके लिए एंजॉय करना। रशियन टेस्ट मुतारिफ़ करवाया यहाँ पे इन्होंने, कोई रशियन रेसिपी या क्या रशियन या यूरोपियन है या क्या है ये जो पिज़्ज़ा आप दे रहे हैं? जैसे इन्होंने बता रही थी कि कुछ फ्लेवर्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो स्पाइसी यहाँ पे ज़्यादा लोग फ्लेवर्स पसंद करते हैं, तो कुछ फ्लेवर्स हमारे पास हैं जो पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक हैं, हाँ तो थोड़े ज़्यादा स्पाइसी हैं। फिर आधी रेंज जो है हमारे पास पिज़्ज़ाज़ की वो यूरोपियन टेस्ट के साथ हैं, तो कुछ हमने यूरोपियन और पाकिस्तानी फ्लेवर्स को मिक्स किया हुआ है ताकि यहाँ के लोग भी वो फ्लेवर्स इन्जॉय कर सकें, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो वाले फ्लेवर्स भी इन्जॉय कर सकें। तो हमारे पास इस तरह की रेंज है, कुछ हमने मिक्स किया हुआ है पाकिस्तानी रेसिपीज़ को, यूरोपियन रेसिपीज़ को, और कुछ मिक्स फ्लेवर्स हैं हमारे पास। अच्छा, लोग तो शादी करते हैं कि कोई बाहर की गोरी से शादी की और बाहर चले गए, इंग्लैंड चले गए, कनाडा चले गए, जापान चले गए, आप रशिया क्यों नहीं चले गए? बस मुझे अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मुझे कोई इस तरह का लालच नहीं था कि मैं शादी करके बाहर जाऊँ या कोई इस तरह के रूट में जाऊँ। तो मैंने जब इनसे मिला था तो मैंने इनको कहा था कि बाकी सब चीज़ें हम हो सकती हैं लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं मूव कर सकता, तो अगर आप एग्रीड हैं तो फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर्चुनेटली इन्होंने कहा कि जी ठीक है, जहाँ पे भी आप होंगे मैं आपके साथ रहूँगी, तो फिर मेरे साथ यहीं पर शिफ्ट हो गई। हाउ यू कन्विंस्ड योर पेरेंट्स फॉर दिस मैन? My husband, he convinced my parents himself. So we had meetings, and by talking to each other, understanding personality, they started to trust him because he is a very good personality and the most important, very kind heart. How's your perception about Pakistan before and now? Before, I didn't know much about Pakistan. I had not a very good perception because it was famous not with very positive events. But now when I came to Pakistan, when I live here, I see that it is very different. People are very kind here, and I love people over here, and atmosphere is good, and we should always judge not because of political events, but by people itself who live there, who live here, because people, it is what makes country, actually. Not government, not politicians, but people make country, I suppose.
Of course, there are some difficulties now when Pakistan has a crisis, economical, political. But the most important that like we have each other, we have family, and it makes us happy for now. When he proposed you and when you know that he's Pakistani, what's the first impression you got? I used to work in airport in Moscow, Sheremetyevo airport, and once upon a time when my schedule was about over, Usman came to airport. It was 6 o'clock in the morning. He came with flowers and he proposed me. I didn't expect it. I was shocked and surprised at the same time. I was like, first of all, not ready that I have to resign and quit my job. And but of course, I agreed. So we love each other, and it is the most. First sight love. Huh? First sight love. Yes, kind of. It was love from first sight. First of all, we were just. I was showing him Moscow, and he was asking me questions about Russia. But when we knew each other, personality, characters, we decided that we are soulmates, and it is very important to find a right partner in your life. फूल शूल लेने पड़ते हैं, एक घुटने के ऊपर नी के ऊपर जाके प्रपोज किया, इनको फूल दिया, अंगूठी दी, इन्होंने यस कह दिया, मैंने कहा विल यू मैरी मी, इन्होंने कहा जी यस। फिर हमें प्रपोज करके दिखाएं जी भाईजान, जी फूल लाएं जी। डू इट अगेन जी, ये देखिए हमें प्रपोज करके दिखाएंगे। जी जी बिल्कुल आप करें, और पूरा हमें वही यू टेल हिम अबाउट दैट he proposed you same before some years ago. Okay. Will you marry you again? Yes. You said yes? I said yes. Wow. Why? I knew his character already, and it was logical point where we are moving to. So, yes. If you love each other, then you have to start your family. I think yes. One thing you love about Usman, that's why you married Usman. He is very kind and very responsible, very generous also. He is very honest. That is very rare quality, very honest, and always keeping his promises. And he's just great personality. Why are you laughing? Huh? I love him. One Pakistani food, street food you love? I used to like it first of all when I came here, but for me it is too spicy. Honestly, it is has good flavors. One dish you love? I like chicken achari and yes, chicken achari. Chicken achari? Chicken achari I like. What about biryani? I am not big fan of biryani honestly, but many other foods I also like, yes. And shami kebab is yes must have in our breakfast nowadays. I used to love it, and in general I used to learn how to cook everything. I think Pakistani food industry have potential for worldwide, attract the tourist here. For attracting tourists, I think you can keep same flavors. Just don't put any green chili and red chili. Then it will be fine. That's our culture. That's our culture. If you want to have customers like Indians, Pakistanis, you can keep spicy food. But if you want to attract foreigners, then you need decrease just spicy amount. Use all flavors, but less spicy. Many people like spicy food, so I think it's good to have a combination of spicy and non-spicy food. So you can win both. Who likes more mild taste but still flavored, and who likes spicy food at the same time. How you love about Pakistani culture? Anything you love about Pakistani culture? Anything you like Pakistani culture which is missing in Russia? What I like about Pakistani culture is that families are supporting each other. It is like if somebody is in trouble, they will definitely help. And people have kind heart, and people are very lovely. Supporting Supporting people. Families are supporting. Yes.